ହେଲା मोर मोबाइल साइलेंट कर देते ହେଲା Okay, good morning dear students, and before we start let me introduce myself. I am Chinmaya Guru. I have completed my MSc from Sambalpur University and MPhil from Berhampur University, and recently my PhD is going on in Berhampur University, and I am working here in Pragati College as a lecturer in chemistry since 2012. Okay, so basically I will teach you chemistry, and before going to this chemistry topic that what I will teach, first let us discuss what is chemistry. Chemistry काना chemistry कहाँ के क्वाजेसी आउ chemistry रे हमें काना पढ़सू. Let's discuss about that part. Okay, so in chemistry we discuss or what is this chemistry. Chemistry is a branch of science. It is a branch of science that deals with the study of matter. Important is here matter. So basically in chemistry we study about a matter. Okay, very simple. So what is chemistry? Chemistry is a branch of science that deals with study of matter. Is it clear to all? आमे chemistry रे matter विषय रे पढ़ू. We study about the matter. Now next question is that what is this matter? Matter काना बा matter कहाँ के कहा जैसी? What is a matter? Matter it is anything किसी भी ले पारे that has some mass and occupies space. जे किछि स्पेस ऑक्युपाई करबा और जार किछि मास रहेबा ताके हमें मैटर कहबा. इज इट क्लियर टू ऑल? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. जहार भी किछि मास रहेबा और जे किछि स्पेस ऑक्युपाई करबा ताके हमें गुटे मैटर कहबा. लेट्स गो टू एग्जांपल. दिस डस्टर जे डस्टर में धरी छे ए डस्टर रो भी किछि मास अछि. एटी किछि मास अछि आ ये किछि ए जगह रे एटा गोटे प्लेस ला मु ए ऊपर ए डस्टर के रखु छे. सो व्हेन आई एम कीपिंग दिस डस्टर ऑन दिस बुक रो किछि स्पेस ऑक्युपाई कला ना नै. सो सिंस इट इज ऑक्युपाइंग सम स्पेस ये मैटर. ये स्पेस ऑक्युपाई करछो बोले आउ केन जानबो. मोबाइल रखवा ले चाहिबी. आई वांट टू और मो स्टेपलर ता रखवा लागि चाह. स्टेपलर रखवा लागि हेले मते डस्टर के अलगा भागे पड़बा. आई हैव टू डस्टर देन ओनली आई कैन पुट दिस स्टेपलर. Still say that this duster and occupying some space. यार किछि मास रहे किछि स्पेस ऑक्युपाई कला. तो जहार भी मास थिबा आ जे भी स्पेस ऑक्युपाई करथबा हमें ताके गुटे मैटर कहि पारबो. इज इट क्लियर? सो मैटर इज दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. जे किछि स्पेस ऑक्युपाई करबा आ जहार किछि मास रहबा ताके हमें गुटे मैटर कहि पारबो. तो तुमे जदि नोटिस करबो, इफ यू नोटिस सराउंडिंग यू व्हाटएवर द थिंग्स आर अवेलेबल, तमर चारि पाखरे जहां भी अवेलेबल अछि एवरीथिंग इज ए मैटर. तुमे नोटिस करबो चॉक, डस्टर, फैन, कूलर, चौकी, बुक, ड्रेस, पेन, जितकी भी तुम सराउंडिंग रे देखुछो एवरीथिंग इज ए मैटर. एंड बिकॉज़ everything has some mass and they occupy some space. जणे कहि परबा सर एयर will be a matter or not? Yes, air is also a matter. कारण एयर रो भी किछि वस्तु तो रहबा आ एयर भी किछि स्पेस ऑक्युपाई करछि. जेंति कि हमें बैलून रो एग्जांपल लेले हमें जानि परमा जिसने एयर रो भी किछि स्पेस रहउछि. सो हमर पूरा यूनिवर्स जदि देखबो सेही यूनिवर्स ता मैटर के नै ही तैयारी हिछि. सो होल यूनिवर्स रे जति भी माने यूनिवर्स के हम यदि कंसीडर करबा
Is it clear to all? समस्त बुझी पारुछो? So matter is anything. तो ये matter example I will ask you will write yourself. तमे निजे matter example किछि भी लिखि पारो. चॉक ही पारे डस्टर ही पारे बुक ही पारे एयर ही पारे एनीथिंग एक्चुअली पूरा मेटल सॉइल भी ही पारबा जेतकी तुमे देखो सॉइल ही पारबा सो व्हाटएवर द थिंग्स यू आर लुकिंग एवरीथिंग इज अ मेटल आवर यूनिवर्स रे एटसेट्रा मु लिखि दुचे आई एम लिखिंग एटसेट्रा एवरीथिंग इज अ मेटल पूरा यूनिवर्स ता मेटल को नेकी ही तैयारी हिची इज इट क्लियर टू ऑल बुझियला समस्त को मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास and occupy some space matter ताहा के कहबा जे किछि मास occupy करबा त जहार किछि मास रहिबो आ जे किछि space occupy करबा क्लियर सो मैटर रो एग्जांपल दबाटा इजी हला समस्तंग लागि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड occupies some space जेंति एयर में कहनी एयर इज ए also a matter chalk is also a matter duster is also a matter book is also a matter water is also a matter तो तुमे जे नोटिस करबो ताहले सराउंडिंग रे सब किछि जदी मैटर रहला ताहले अपार्ट फ्रॉम मैटर आ किछि एग्जांपल अछि कि नथिंग मैटर के छाडी देले यूनिवर्स रे आ कोनोसी एग्जांपल आ नाही तो पूरा यूनिवर्स केवल मैटर के नै कि ही तयारी हिछि तो सेही मैटर विषय रे पढबाटा होचे के साइंस और सेही मैटर विषय रे पढबाटा होचे साइंस सेही मैटर विषय रे आमे साइंस रो केमिस्ट्री सब्जेक्ट रे पढसु सो यू कैन सी हाउ इंपोर्टेंट केमिस्ट्री इज यदि पूरा मैटर के नेकरी यूनिवर्स बनला आ से यूनिवर्स के स्टडी करबा लागि तो मैटर रो स्टडी जरूरी है तो सेति लागि मैटर रो स्टडी करबा लागि हम केमिस्ट्री पढबाली पड़बा तो साइंस रो जे डिफरेंट डिसिप्लिन अछि फिजिक्स रहला बायोलॉजी रहला केमिस्ट्री रहला ए जो डिफरेंट डिसिप्लिन जेंडा रहला ई प्रत्येक डिसिप्लिन रो केमिस्ट्री डिसिप्लिन रे वी डिस्कस अबाउट द मैटर आमे मैटर विषय रे डिस्कशन करसु आ मैटर माने काना दैट इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड दैट ऑक्युपाई स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमे मैटर विषय रे व्हाट वी स्टडी अबाउट द मैटर आमे मैटर रो काना पढसु दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन हम तो मैटर विषय रे पढसु इडा केमिस्ट्री ठीक अछि मैटर रो आमे काना पढसु व्हाट वी स्टडी अबाउट मैटर वी स्टडीज अबाउट द कंपोजिशन we study about the composition of matter we study about the physical and chemical change of matter we study about the various physical and chemical change that takes place in matter रे केन प्रकार रो physical chemical change होउचे आमे तार विषय रे भी केमिस्ट्री रे पढसु मैटर रो कंपोजिशन काना अछि हमें तार विषय रे केमिस्ट्री रे पढसु बुझियाला समस्तंग सो इन केमिस्ट्री with or chemistry deals with the study of matter its composition and various physical chemical changes taking place in it गुटे मैटर भितरे केन केन प्रकार रो फिजिकल आ केमिकल चेंज होउचे हमें सेटा आमे केमिस्ट्री रे पढुछु इज इट क्लियर टू ऑल समस्त बुझी पारलो सो मैटर व्हाट इज मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस सेही मैटर रो कंपोजिशन फिजिकल और केमिकल चेंज तार भितरे काना होउचे तार विषय रे पढवाटा होउचे केमिस्ट्री बुझियला is it clear I have no or I am not going to the definition of science because tomorrow already physics रे biology रे टीचर माने साइंस विषय रे बुझे सारथिबे so I am not dictating what is science right now आउ खाली if you will ask me about from all big definitions what is matter जदी मु पचरेबी so and what is matter जदी मु पचरेबी ई जगह रे सॉरी what is science जदी पचरेबी मी तुमको तुम तो बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन देबो but I believe that in science one is most important that is why तुम साइंस रे why पचरावर एटीट्यूड तुम रहबा कथा if you are not asking anything why means you don't have the attitude to write to read science why the meaning काना suppose तुमको जने कहला you go to that place तुम से प्लेस के पढौछ बिना इंक्वायरी रे means you have no attitude to science suppose if I will ask you come to the college and you just randomly coming and you are not asking me sir why I should I come to the college
then it is also not the attitude of a science student. So whenever you are going to the science, the most important word is why. So that देखो जेंति की प्रगति कॉलेज रे पढ़वार लागि तुमको ना लिखवार लागि कुआ गला तमे यदि नाही जानि कि why you are going to प्रगति कॉलेज, then it is not the attitude of a science student. तो सेरा बापा कोन, टीचर कोन, फ्रेंड्स को जे भी को, there should be an attitude to ask the question why. So when you have this attitude, you will definitely do well in science because you have the anxiety to know something. तो मैं randomly कोई जिनिस के receive नहीं करवा. You cannot imagine something in science. तो मैं science रे किसी imagine करी नहीं पारो. जिंदगी just like poet in literature, they do imagination, a lot of imagination they do. But in science there is no such imagination. Science is totally based on facts and experiment. गोटे science रे facts रहे, experiment रहे. आमे साइंस रे एक्सपेरिमेंट थ्रू जेंटा कंक्लूजन रे आसुछु सही कंक्लूजन के आमे साइंस रे पढुछु. तो साइंस रे इमेजिनेशन रो प्लेस कम अछि. बुझी होचे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. So in science we don't have that, or in science we cannot go to that imagination part. So science totally based on true events. Science totally based on facts and experiment. और से facts experiment true event जानवार लगी हेले तुम्हारे भीतर why question बताना बहुत जरूरी है. You should ask the question why. Is it clear to all? तो science रे why पचरावा necessity रहबा कथा. आउ गोटे important point हवा science student लगी गोटे innovative हवा था. A science student has to be innovative also. तो मतलब innovative नुहे. If you are not innovative, then also there will be too difficult for you to cope in this world particularly. What is the meaning of innovative here? Here innovative means, it is not innovative means you have to be think differently from others. In what way you can apply it in your life or in this class? In this class, suppose I have given you 1, 2, 3, 4, 5, 6 examples, and you are asked give example of matter. And if you are giving only this example, means in this case I can say you are not thinking in a different way from others. You have to go apart from this example because you have understood the matter. तमे जेतु matter कना बुझी गलो, तमे ए example बाहरे आहुरी example तुमको निजे collect करवा के पड़बा, so that you can make yourself different from others. जेमति कि innovative जदि जने नाही हबा, then you cannot have some big thing in science actually. Just go to that Newton. तमे जदि Newton पंकर example के जीवो, that Newton who has discovered the gravitational force. तमर समस्तंगर मने थिबा Newton gravitational force विषय डिस्कवर करथिले, because it is not like the gravitational force आगु नथिला अर्थ रो. आगु भी अर्थ रो gravitational force थिला. But why we are giving emphasis on Newton? Because Newton has identified that facts. Newton से fact के लोकलोचन के आनले. How he brought this into the public? That Newton को story जेंटा अच्छे, जे Newton गछ तले बसिथिले and there was a apple that was falling on his head. तांकर मुंडो ऊपरे गोटे apple पड़ला. तो तार माने काना आगुरु काहरी मुंडो ऊपरे apple पड़ियो थिला. आगुरु भी बहुत लोग गछ तले बसिथिले. But आमे आउ काहे सब रखिजु कि Newton परे आउ इतकी लोग रे तांको हम सब रखुजु. But why we are recalling Newton? Because that apple falls onto his head, he take it in a innovative way. से ताके गुडे इनोवेट नेले जैसे तांकर भीतर एक क्वेश्चन आसला जे why that apple is falling, काहे थिले कि apple fall करू से जे क्वेश्चन why कले, so that's innovativeness तांकर रे आसी छी. You getting my point? तो साइंस रो डेफिनेशन के मैं डिटेल नाही जीवा. तो साइंस रे हम फैक्ट्स, ट्रू इवेंट, एक्सपेरिमेंट ऊपर साइंस बेस्ड करू छे. और साइंस रे मोस्ट साइंस स्टूडेंट रो मोस्ट कॉमन एटीट्यूड रहबा कथा टू आस्क क्वेश्चन why and to innovative. Eta remember, you can apply it to in your daily life. Our educational system re, our GB, if anybody is asking why, then we take it in an argument way also. But let me clear you, asking a question why is not an argument to the teacher or not an argument to the parents. But your way of asking question also should be in a well-behaved manner. एमती नाही जे randomly सबले सार ता कहले why पचरबी बोली सब बेले पचरबी बाबू हाथ खाबे बोली कहले why पानी पीबी जा बोली कहले why. It is not like that. मोर ताके गोटे पॉजिटिव वे रे तमे निबो
जे आमे why पचरेमा with your manner हमर मैनर ठीक रहबा बहुत जरूरी है आ हमको इनोवेटिव हवा के पड़बा आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम emphasizing that in science we will ask or the more we will put more importance on the word why and we will be innovative clear तो से साइंस रो जो वेरियस डिसिप्लिन जोटा रहला से साइंस रो वेरियस डिसिप्लिन रे हमर केमिस्ट्री होची गुटे ब्रांच ऑफ साइंस and in this chemistry we study about the matter ame chemistry re matter विषय रे पढू we study about the matter and what is this matter matter is anything that has some mass and occupies space matter is anything that has some mass and occupies space ଆଉ ସେହି matter ର ଆମେ composition ଆଉ various physical chemical change विषय ଆମେ पढू we study about the compound or composition of matter and various physical chemical changes taking place in it सेही matter रे केन प्रकार रो physical और chemical change होउचे आमे सेटा साइंस बास आमे सेटा केमिस्ट्री रे पढुछु okay now we can write the definition what is chemistry clear so let's start write everybody मोर संग नहीं लिखो तुम समझते you can write by yourself also let's write what is chemistry let's write समझते खाता बाहर करो और मोर संग नहीं definition लिखवा ले try करो so that you will be you will have a feelings that you are in the classroom समझते खाता रे साइड रे रखो और साइड रे रखी की खाता रे तुम समझते मोर संग रे केमिस्ट्री रो डेफिनेशन लिखवा ले चेष्टा करो और एटा को माने मेमोराइज करना दरकार नहीं नो एग्जाम यू विल बी आस्क्ड राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रो डेफिनेशन लिखवा नहीं कोई but you may be asked about your parents may ask or anybody can ask जे केमिस्ट्री तुम कार विषय रे पढछो सिंपल आंसर हवा केमिस्ट्री रे हमें मैटर विषय रे पढछो मैटर रो हमें कंपोजिशन पढछो मैटर रो फिजिकल और केमिकल चेंज काना होउचे मैटर रे हमें तार विषय रे हमें केमिस्ट्री रे पढुछो इज इट क्लियर सो लेट्स राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री मोर संग रे लिखो केमिस्ट्री is a branch of science chemistry is a branch of science ये गुटे science रो गुटे branch which we can put here a comma which deals with the study of matter which deals with the study of matter comma its composition matter कहा के नहीं की तैयारी हिचे that is called composition its composition and various physical chemical changes and various physical chemical changes taking place in it this is the complete definition of chemistry got it so I think you are clear now so chemistry is a branch of science which deals with the study of matter जेने की आमे मैटर विषय पढू मैटर इज कंपोजिशन मैटर कहा के नहीं की तैयारी हिचे एंड वेरियस फिजिकल केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट तार सने केन प्रकार रो फिजिकल और केमिकल चेंज होउचे ताके आमे अब केमिस्ट्री सेटा आमे पढबा ए जगह रे मते लागु जे मु मैटर रो ऑलरेडी डिफाइन करते सारी जे कंपोजिशन माने कहा के नै की तैयारी हिची लेट्स सी कंपोजिशन माने तुम काना बुझिजो आमे कहला जे एई गुटे लेट्स सी आमे गुटे खीरी आइटम का मेनो आमे खीरी समस्त को बहुत पसंद लागसी खीरी कहा के नै की तैयारी जे दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ए खीर कंपोजिशन में का रखि दैट इज राइस मिल्क शुगर इता के नै की खीरी तैयारी हिची तो सेंती कंपोजिशन माने हला कहा के नै की तैयारी होउचे ताके हम कंपोजिशन कहूछु ठीक अछि आ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडी कहा के नै की तैयारी हिची ब्लड फ्लैश बोन्स
हमर बॉडी रे रक्त मांस हाड़ अछि तो हमर कंपोजिशन रे से सब रहला इज इट क्लियर टू ऑल तो कंपोजिशन माने समस्त बुझी पारुछ नेक्स्ट अनदर वन इज physical and chemical changes this two term little bit student get confused these are physical और chemical change माने हम काना बुझिछु मु सिंपल गुड एग्जांपल थ्रू तुमको बुझावा lai चाहेबी दुईटा हम डिफरेंशिएट करके ही बुझौ छै लेट मी क्लियर यू by example and differentiating them together फिर physical change और chemical change के आने में डिस्कशन करना ये हम कहा कि बड़े physical change कहमा और कहा कि बड़े chemical change कहमा what is the basic difference between physical change and chemical change basically the physical change कहला तार माने हला the new there will be no new substance will form in physical change कोनोसी प्रकार नुवा सब्सटेंस गुटे फिजिकल चेंज रे तयारी नाही जेंति कि लेट्स से हम गुटे प्लेट रे मुडे आइस क्यूब रखु छै मु प्लेट रे किछि आइस क्यूब रखु छै आई एम कीपिंग सम आइस क्यूब on a plate किछि टाइम परे आफ्टर 5 मिनिट आफ्टर 10 मिनिट्स काना देखा दिबा that ice will melt into water yes or no से आइस टा वाटर रे कन्वर्ट हेबा इज इट क्लियर आमे प्लेट रे किछि आइस क्यूब नेला किछि टाइम परे आमे देखमा से आइस क्यूब टा वाटर रे मेल्ट हो जायछि दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इजी एटा तमे समझते निजे करि पारबो घरे भी तो ई जगह रे आइस का व्हाट इज आइस आइस इज द वाटर इन सॉलिड स्टेट हमें जलर कठिन अवस्था को हम आइस कहउछु सो आइस इज नथिंग बट वाटर बट इन द सॉलिड स्टेट व्हाट इज water that we commonly use that is also H2O but it is in the liquid state सेही जगह रे water liquid state रे रहे तो see ice is also H2O and water is also H2O means a जो change हला in this change no new substance is formed कोनोसी प्रकार रो नुवा सब्सटेंस ए जगह रे तयारी हेई नाही ए जगह रे वाटर थिला सी वाटर ही हला yes you can say the state of substance change माने solid state to liquid state हला that is the state change हमाटा के substance change हला बोले हम नाही को तो आमे कहि परमा जे ए प्रोसेस रे कोनोसी प्रकार रो नुवा सब्सटेंस तयारी हेई नाही सो फिजिकल चेंज आमे सेतबेले कहमा when there is no new substance is formed जेतेबेले कोनोसी प्रकार रो नुवा सब्सटेंस तयारी नाही हेबा ताके आमे गोटे फिजिकल चेंज बोली आमे कहमा लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल आमे मार्केट रे देखिमा कोयला बा कोयला छिले तमे देखि दिबो समस्ते कोक से कोक जेतेबेले ऑक्सीजन प्रेजेंस रे आसे इट्स गेट बर्न कोयलाटा जेतेबेले ऑक्सीजन प्रेजेंस रे आसबा बा ऑक्सीजन संगे रिएक्शन करबा सेही टाइम रे से जळबा तो कोयला जेतेबेले जळुछि और व्हेन coke get burned what is coming out from that burning carbon dioxide gas come out तो कार्बन जेतेबेले बा कोक जेतेबेले ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळुछि सेही टाइम रे कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलुछि सो व्हाट यू विल फाइंड हियर इन दिस चेंज माने काना कार्बन ऑक्सीजन संगे तो मिसला उडे कार्बन डाइऑक्साइड तयारी हैला और कार्बन डाइऑक्साइड माने उडे नुवा सब्सटेंस तयारी हैला आगे वो कार्बन थिला और ऑक्सीजन थिला बट नाउ यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस एटा गुटे जो नुवा सब्सटेंस तयारी हैला सेति लागि आमे ताके गुटे केमिकल चेंज करना इज इट क्लियर कोक माने से सॉलिड स्टेट रे थिबा ऑक्सीजन गैस स्टेट रे रहबा कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट रे रहबा सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर इन द रिएक्टेंट साइड तुम देखबो एटा रिएक्शन रे केमिस्ट्री कोला बेले रिएक्शन भी तुम जानि थिबा आगु एटा को हमें रिएक्टेंट साइड कहमा या कि हमें प्रोडक्ट साइड कहमा ये हला रिएक्टेंट ये हला प्रोडक्ट so in the product you are getting the same substance तो नुवा सब्सटेंस ए जगह तयारी हो नाही सेति लागि हमें दे फिजिकल चेंज कहमा और जे जगह रे नुवा सब्सटेंस तयारी हेबा हमें ताके केमिकल चेंज बोली कहमा इज इट क्लियर सो ए केमिकल चेंज इज associated with formation of new substance and physical change does not associated with formation of new substance तो हमें कहि बारना no new substance is formed no
न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कोनोसी नवा वस्तु तयारी नाही हुए नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कोनोसी प्रकार नवा सब्सटेंस तयारी नाही हुए सिमिलरली ये जगह रे a new substance is formed new substance is formed तो substance बोले मैटर भी कोई करो new substance is formed तो नुआ substance तयारी हैला हमें कहबा chemical change आउ जदी नुआ substance तयारी हो नाही ताहले हमें ताके physical change बोले हमें कहि पारबो सॉरी नुआ substance तयारी हैला नै physical change और नुआ substance तयारी हैला chemical change one more difference is this physical change is generally reversible in nature what is mean reversible माने हला आमे अगेन वाटर जदी हम फ्रिज रे रखि दमा ताले से आउ थोरे हमको वाटर मिली जिबा सो वाटर बा आइस हमको मिली जिबा तो जनरली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल तो ओडिया रे प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती भी कहसो जेटा तो आमे जदी वाटर के आमे आउ थोरे जदी फ्रिज रे नेकी रखि दमा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेम आइस आउ तुम जदी आइस वाटर पाइलो आ वाटर रो जदी फिर आइस फेरी पाइलो ताले सेही प्रोसेस के रिवर्सिबल प्रोसेस बोली कुआ हसी तो जनरली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर बट हमें कार्बन डाइऑक्साइड रू और कार्बन और ऑक्सीजन हमें नहीं पाओ you cannot get back this reaction तमे ए रिएक्शन के और बैक साइड रे और बैकवर्ड रे आनी नहीं पारो एटा को फॉरवर्ड रे भी जाई परबा और ये बैकवर्ड रे भी आसी परबा तो जेन रिएक्शन भी फॉरवर्ड रे और बैकवर्ड रे आसी फॉरवर्ड रे भी जाई परबा और बैकवर्ड रे भी आसी परबा फॉरवर्ड माने आके जीवाटा बैकवर्ड माने फिर प्रोडक्ट टू रिएक्ट करनाबाटा सही प्रकार रिएक्शन को हमें रिवर्सिबल रिएक्शन बोली कहू we say that are reversible reaction so this is a reversible in nature but ये back नहीं करि पाए तो सेति लगा लिखम कहमा हम लिमिट होइছে because it is तोळे देखा रे होतबा no new substance is formed आउ कने कहला this is irreversible in nature आउ ये पछके फेरी नहीं पारे अब टिके तळके छोटा पुंजा आउ टिके तळको करके टिके जस्ट this is reversible in nature this is reversible in nature and this is irreversible in nature I hope you all are getting it clear तो की बोलते हम गाना पढ़ी छु chemistry is a branch of science which deals with the study of matter its composition word में बुझे सारी चीज ऑलरेडी and various physical chemical changes taking place in it केन प्रकार रो फिजिकल केमिकल चेंज तांकर भितरे होउचे सेटा हमें केमिस्ट्री रे पढुछु इज इट क्लियर टू ऑल समस्त की बुझी पारलो आई होप यू आर गेटिंग इट तुमे बुझी पारुछो ताले हेलो if you are getting it then you can easily write this example so let me check what are the common questions potassium plus O2 can also be considered as a chemical change देखो गोटे पुला पचारु छ नै जगह रे पपुन शर्मा इज आस्किंग ए क्वेश्चन potassium O2 O square you are writing it is not O square it is actually O2 potassium आउ ऑक्सीजन की नहीं की कंसीडर करा जाई पारबा कि नहीं देखो सब्सटेंस मानकर केमिकल रिएक्शन जेन जगह रे तुम कंसीडर करबो ताके तुम केमिकल चेंज नहीं पारबो आउ ए रिएक्शन ता कॉमन रिएक्शन होली कि मु तुमको से एग्जांपल दे ए रिएक्शन तो तुम समस्त जानिथिबो ए रिएक्शन इजीली तुम बुझी पारथबो या इजीली बैलेंस की अछि तो हेई पारबा किछि असुविधा नहीं तो तुम जे कोनसे भी केमिकल रिएक्शन जदि नबो सेही केमिकल रिएक्शन के हमें गुडे केमिकल चेंज रे हमें कंसीडर करि पारमा रंजिता सिंह गुडे पचरोजन इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंस कैन चेंज इनटू इट्स फास्ट फॉर्म बट इन केमिकल चेंज इट कैन एक्चुअली फास्ट फॉर्म रो माने तुमे काना कहू जे फास्ट फॉर्म माने इट इज नॉट फास्ट फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म इट इज कॉल्ड स्टेट जेन स्टेट रे थिला सही केमिकल फार्मूला खाई की से जदी आउट स्टेट के चेंज हैला स्टेट कहबो फास्ट फॉर्म नै कहबो तुम यू विल से स्टेट तो जेन स्टेट रे थिला से आउट स्टेट के जदी जीवा ताले हम फिजिकल चेंज करि पारमा
तो फर्स्ट फॉर्म जगह फर्स्ट स्टेट तुम लगावटा बहुत बेटर है क्लियर ओके वेरी गुड श्रुतरानी पटनायक यू हैव रिटन डेफिनेशन ऑफ chemistry. It is a branch of science that deals with the study of matter, its chemical matter पर comma दबो, you will put comma here, matter, its chemical composition and various physical various VARIOUS तुम्हें VARYUS लिखी जो नहीं various 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 physical change and chemical change taking place in it. ठीक अच्छी you are trying your best. I hope you are enjoying the classes. आउ तुम्हें जो ये जो व्हाट्स जो YouTube चैनल कमेंट बॉक्स रे तुम्हें आंसर न लिखी कि what you will do you will write in your copy आउ हमर से केमिस्ट्री ग्रुप रे तुम्हें जेंटा लिखी थिबो सेटा तुम्हें शेयर करबो. I am giving you some common instruction to you. तुम्हें जेते बेले क्लास के एंट्री करू छो क्लास के एंट्री कला बेले तुमर से ग्रुप रे धरिना हम 9:30 रे क्लास स्टार्ट हबा हमें 9:45 किंबा 9:50 तक हमें क्लास कंटिन्यू करि पारमा. रेस्ट 10 मिनिट तमे जेन जेनटा नोट्स लिखि थिबो क्लासरूम बा ब्लैक बोर्ड जहां जहां लिखि थिबो तमे सेही 10 मिनिट रे सेही ग्रुप रे तमे पोस्ट करबो जेनटा कि मोर पाखरे क्लैरिफिकेशन रहबा जे तमे नोट लिखलो तार संगे तमे काना करबो समस्तंग रोल नंबर तमे आ ना संगे तमे लिखबो एंड दैट विल बी योर अटेंडेंस. हमें प्रत्येक दिन 9:45 परे क्लास ऑफ करमा आ 9:45 रे हमें सॉरी हम 9:30 रे क्लास स्टार्ट होचे माने हमें 10टा 15 10टा 20 जाय क्लास लाइव क्लासेस करमा 10:15 रु 10:30 भितरे हमें व्हाट्सएप थ्रू रु हमें कन्वर्सेशन करमा जेन जगह रे कि तमे समस्ते निज निज रोल नंबर पहला लिखबो आ ना लिखबो जेनटा कि तुमर अटेंडेंस के बुझावा आ तार संगे तुमे सेही 45 मिनिट रे काना काना लिखलो खाता रे तुमे सेटा नोट जेन रफ नोट रे जेनटा तुमे लिखि थिबो सेही रफ नोट तुमे साइन करबो. ओके इज इट क्लियर. पहला तुम रफ नोट सेंड करबो तापरे तुम राति रे सेही रफ नोट के पुनी यदि भल से रफ नोट नहीं लिखाई ताके आउ थरे फेयर करी गिरी निज नोट कॉपी रे तुम मेंशन करि पारबो. बट समस्तंगर पाखरे रफ बहुत जरूरी है. एबे जनकर बहुत भल अच्छे तार से आउ थरे बट तमे सेही नोटटा मोर संगे सेही लास्ट 10-15 मिनिट रे हमें सेही नोटटा हमें शेयर करमा आ तमे समस्तंगर अटेंडेंस सेटा रहबा. मते लागु जे गोटे छुआ एबे ही रोल नंबर आ ना लिखि देलो निज ग्रुप रे. सो यू विल राइट योर रोल नंबर एंड नेम दैट विल बी योर अटेंडेंस and it is not only in chemistry actually you will give your attendance in every period. Okay and I am giving you समस्तंकर से WhatsApp ग्रुप रे निज निज अटेंडेंस मस्ट दबो कारण जणा पड़बा जे सेही क्लास तमे अटेंड करै छो. ठीक अछि. आई होप अप टू दिस वी आर क्लियर. कैन वी मूव फॉरवर्ड. हम आके जाई परमा आबे तो हम काना काना पढ़ला न केमिस्ट्री काना हला केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its composition and various physical chemical changes taking place in it. I hope you all are clear. समस्ते बुझी पालो जगह कड़ा करा गला. Is it clear to all? Okay. Next we can go to move निजे live रू पढ़ी गली. Let me just come to the live class so that I can watch your comments. Wait a minute. Just 1 minute please. Okay. Now I am available. Clear. So I hope we are clear now up to this. अब हमें ऑलरेडी मैटर गाना पढ़ी सारी छु. व्हाट इज मैटर. मैटर फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बुझियला. इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कोनोसी नवा सब्सटेंस तयारी नहीं हुए केवल मैटर तर गुटे स्टेट रु आउट स्टेट की कन्वर्ट होबा किंतु केमिकल चेंज रे नवा सब्सटेंस फॉर्म होबा. फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल इन नेचर. केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल इन नेचर. I hope you all are clear. Chalk will be a matter or not? Yes, it is a matter. Duster is a matter or not? Yes, it is a matter. Because what is matter? Matter kana likha hai tera koi takwa. I think everybody can. You cannot say okay because there is no such developed technique we have that you can say and I can write here simultaneously through YouTube actually. YouTube रे सेंदी किसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होता यदि हमारा इन फ्यूचर इट विल बी वेरी गुड फॉर अस. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर. मैटर कहा की कहां से. व्हाट इज मैटर. मैटर इज एनीथिंग
matter is anything तमे निजे खाता रे लिखि पारबो matter is anything don't type it in the YouTube ता YouTube रे टाइप करबा आवश्यकता नाही तमे खाता रे निजे लिखि पारबो matter is anything that has mass जहारो mass अछि and occupies some space जे किछि space occupy करबा matter is anything that has mass and occupies some space जे किछि space occupy करबा आउ जहारो mass थिबा ताके आमे matter कहि परबा is it clear to all matter is anything that has some mass and occupies some space बुझेला आउ एग्जांपल ले काढा काढा कहैतला you can write by yourself air water chalk duster book जहां भी मतलब सराउंडिंग में देखो everything universe में जितनी भी things available अच्छे all these are matter clear is it clear to all what is matter is anything that has some mass and occupies some space जे किछि space occupy करबा और जहां किछि mass थिबा ताके हमें matter कहबा और ए matter रो composition और physical chemical change विषय रे हमें chemistry रे पढुछु we are studying it in chemistry clear okay let's go to the next part एबे हम कि जिमा ए मैटर कहा के नेकी तैयारी हेछि so let's see how this matter is made of मोर एग्जांपल थ्रू बुझाबी let's suppose this is a chalk ये गुटे chalk टे रहला बा chalk त नहीं समझ लोहा कांटेक्ट में इमेजिन करो let's suppose it is a iron nail it is iron nail nail now suppose I will cut this iron nail into very small pieces मुई ए iron nail के इना iron nail रहला ए iron nail के मुई छोट पीस रे ब्रेक करबी बा भांगबी माने जेंति कि सपोज इता के मैं ब्रेक करी I put it इता के मैं आउ छोट करी इता के मैं आउ स्मॉल करी इता के मैं आउ स्मॉल जे स्मॉल पीसेस रे डिवाइड करी सपोज इता iron nail थिला इता मैं स्मॉल पीस रे डिवाइड करी इटा के आउ छोट पीस कली आउ छोट पीस पण एंती गुडे लास्ट फॉर्म आसबा ए वेरी सिंपल फॉर्म विल कम जहा के हमें आउ भांगी नै कर इटा फॉर्म आसबा कि नै तो सबुथु सिंपल फॉर्म जेंटा गुडे आसबा ई मैटर आयरन नेल गुडे मैटर तो ए मैटर रो गुडे जे सिंपल फॉर्म हमको मिलला लास्ट में एट द एंड जहा के हमें आउ भांगी नै पारे by any other chemical reaction बा chemical reaction को कि जे कोनसी प्रकार भी हो आमे जदि ताका फर्दर जदि भांगी नाही परबा if we cannot break into still simple form by any ordinary chemical reaction आमे कोनोसी भी साधारण chemical reaction सहाय्य रे मोने chemical reaction कहू जे जेतु आमे chemical substance विषय रे पढुछु तमा iron nail के टाइम रे कहला बेले आमे आउ छोट पीस रे ताके कट करि नाही परबा by any means ताहले सेही जे सिंपल फॉर्म बाहरला ए मैटर रो आयरन नेल का हम मैटर कोइ बरमा सेही मैटर रो जे सिंपल फॉर्म हमको मिलला जहा के हमें आउ फर्दर ब्रेक करी नाही परबा जहा के हमें फर्दर आउ भांगी नाही परबा सेही सिंपल फॉर्म ना दियाला एलिमेंट तो ए जो बाहरला मैटर रो द सिंपल फॉर्म हला एलिमेंट सो व्हाट इज एलिमेंट नाउ हियर एलिमेंट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ ए मैटर माने एलिमेंट के नेकी ही मैटर तैयारी हेची इज इट क्लियर टू ऑल एलिमेंट के नेकी मैटर तैयारी हेची तो मुई कहली एलिमेंट मरा डेफिनेशन काना एलिमेंट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू स्टिल सिंपल फॉर्म बाय एनी मींस माने आउ का सहाय्य रे बा आउ कोनोसी केमिकल रिएक्शन सहाय्य रे हमें सेही एलिमेंट के आउ स्मॉल पीसेस रे भांगी नाही पारे यू कैन नॉट ब्रेक इनटू still simple form by any chemical means or by any chemical reaction सही substance के हमें element कहमा तो गुडे मैटर कहा के नेकी तयारी हेछि
एलिमेंट के नहीं कि मैटर तैयारी हेची बुझेला डेफिनेशन एलिमेंट रे ताले का मैटर डेफिनेशन हम ऑलरेडी करि सारी छु लेट्स गो टू दिस एलिमेंट व्हाट इज एलिमेंट एलिमेंट काना कहला हम एलिमेंट काई पढु छु बिकॉज़ हमर जे मैटर विषय हम स्टडी करू छु से मैटर एलिमेंट के नहीं कि तैयारी हेची व्हाट इज दैट एलिमेंट एलिमेंट इज ए सिंपल फॉर्म कहार सिंपल फॉर्म कहार सिंपल फॉर्म ऑफ कहार मैटर सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर एलिमेंट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broke down देखो आउ होगा जे नहीं पारे broke down into still simple form जे कि आउ सिंपल फॉर्म के भंगा जाई नहीं पारे एलिमेंट इज ए simple form of matter which cannot be broke down into still simple form by any simple or any ordinary साधारण केमिकल मीन्स बा केमिकल रिएक्शन आमे आउ कोनोसी केमिकल रिएक्शन साहाय्य रे आमे जदी सेही एलिमेंट के आउ भांगी नै पारू तो बेसिकली जो सिंपल आगे कहबी मैटर रो सिंपल फॉर्म के हमें एलिमेंट कहना एलिमेंट के नै की मैटर तैयारी हेची आई होप वेरी सिंपल वर्ड विल बी एलिमेंट के नै की मैटर तैयारी हेची माने मैटर के लिए हमें भांगी देमा ताले हमें एलिमेंट पाना आउ एलिमेंट के हमें केमिकल रिएक्शन सहाय्य रे आउ ब्रेक करी नै पारू वी कैन नॉट ब्रेक इनटू स्टिल सिंपल फॉर्म तो हमें ताके आउ सिंपल फॉर्म रे ब्रेक करी नाही पारू आउ जब कहू डेफिनेशन एलिमेंट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर रो सिंपल फॉर्म के एलिमेंट कहा जिबा व्हिच कैन नॉट बी ब्रोक डाउन जाके आउ भंगा जा नाही पारे इनटू स्टिल सिंपल फॉर्म आउ शॉर्ट फॉर्म रे हम भांगे नाही पारू एंड बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन हमें कोनोसी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन सहाय्य रे सही मैटर के आउ सिंपल फॉर्म रे हमें भांगी नाही पारे ताले ताके हमें एलिमेंट कहला एलिमेंट के हमें आउ सिंपल फॉर्म मैटर के हमें सिंपल फॉर्म रे भांगी परमा मैटर के भांगी लास्ट में एलिमेंट रे पहुंच परमा किंतु एलिमेंट के आउ सिंपल फॉर्म रे हमें भांगी नाही पारे बुझियाला समस्तंकर क्लियर आउ ए एलिमेंट के नेकरी भी आउरी हमें किछि जानि परमा जंदी कि एलिमेंट के लेट्स सपोज हमें एलिमेंट कंसीडर कला एलिमेंट का रही पाए एलिमेंट रे कानासी very small identical particles are there सेही एलिमेंट भितरे हम भांगी तो नहीं पारो ठीक अछि बट सेही एलिमेंट के लिए हम माइक्रोस्कोप रे देखमा जेंति कि सपोज मुई तो गुड ब्लड सैंपल देली मुई कहली जे ब्लड सैंपल रे मलेरिया पैरासाइट अछि कि ना जनको मलेरिया पैरासाइट अछि कि ना जानबार लागि हले हमके सेही ब्लड ड्रॉप के नै कि अंकु माइक्रोस्कोप रे देखबा पड़सी माइक्रोस्कोप काना करसी से ब्लड सैंपल के जूम कर देला पर जणा पड़बा जे से मलेरिया पैरासाइट अछि कि नै तो हम जे खाली आखि रे खाली रेड देखा जाउतला किंतु आफ्टर माइक्रोस्कोप के नेला परे सेही रेड भितरे भी अंकु माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जणा पड़बा जदि से मलेरिया पैरासाइट जदि से अवेलेबल थिबा हम कहै जे मलेरिया अछि तो इतने जूम कला परे बा माइक्रोस्कोप रे देखला परे अंकु मलेरिया पैरासाइट दिसला किंतु नेकेड आइ देखा नै जाउथि सिमिलरली एलिमेंट के तो हम भांगी नै पड़ो ठीक अछि बट सेही एलिमेंट के यदि जूम करा जाए बा एलिमेंट कहा के लेके तैयारी है यदि क्वेश्चन करा जाए ताले एलिमेंट रे काना आसी बहुत गुड़िए स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स अछो तो एलिमेंट रे वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर देयर केतेटा अछन इट इज इन मैटर बहुत गुड़ाए स्मॉल पार्टिकल के नै कि एलिमेंट तैयारी हेची आ ई जे स्मॉल पार्टिकल रहेला ई सबु स्मॉल पार्टिकल माने समान थिबे आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हला ई सबु पार्टिकल भितरे नंबर ऑफ प्रोटॉन थिबा नंबर ऑफ प्रोटॉन ई सबु पार्टिकल रे समान थिबा जेंति कि सपोज इडा गुटे मु कहली ऑक्सीजन एलिमेंट ई एलिमेंटा मु कहली ऑक्सीजन एलिमेंट तो सेही
ऑक्सीजन एलिमेंट रे काना हवा ऑक्सीजन एलिमेंट रो सिंबल O हला ऑक्सीजन एलिमेंट रे बहुत गुडे स्मॉल पार्टिकल रहबा सेही स्मॉल पार्टिकल सब पार्टिकल भितरे 8टा लेखन प्रोटॉन अछि 8 प्रोटॉन ए पार्टिकल रे 8टा ए पार्टिकल रे भी 8टा प्रोटॉन अछि ए पार्टिकल रे भी 8टा प्रोटॉन अछि तो सब पार्टिकल रे 8टा लेखन प्रोटॉन अछि बुझियला तो प्रत्येक पार्टिकल एलिमेंट भितरे जेकी भी पार्टिकल रहेला ए जगह रे ई सब स्मॉल पार्टिकल के नेगरी एलिमेंट तैयारी हला आ ई सब स्मॉल पार्टिकल भितरे समान नंबर रो प्रोटॉन संख्या थिसी गुटे एलिमेंट भितरे हां जदी एटा गुटे आयरन एलिमेंट हेजिबा ताहले सेने जे आयरन एलिमेंट भितरे जे पार्टिकल थिबा तो आयरन माने सिंबल Fe आयरन एलिमेंट भितरे जे पार्टिकल माने थिबा ई सब पार्टिकल समान हेतिबे किंतु आयरन एलिमेंट भितरे जे पार्टिकल थिबा तांकर भितरे 26 टा प्रोटॉन रहसी बुझियला तो जेकीटा एलिमेंट तुमे देखुछो से सब एलिमेंट भितरे सही एलिमेंट रो किछि स्मॉल पार्टिकल रहबा और सही पार्टिकल मानकर माने ई भितरे जेकी आयरन एलिमेंट भितरे जेकी पार्टिकल रहले समस्तकर भितरे समान नंबर रो प्रोटॉन थिबा इज इट क्लियर सेंटी ई ऑक्सीजन एलिमेंट भितरे जेकी भी स्मॉल पार्टिकल रहला समस्तकर भितरे समान नंबर रो प्रोटॉन थिबा केतरा प्रोटॉन थिबा 8टा प्रोटॉन थिबा आ से जेकीटा प्रोटॉन से स्मॉल पार्टिकल मानकर भितरे रहला सो माने इने 8टा प्रोटॉन अछि इने 26टा प्रोटॉन अछि सेताको सही एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर कोहासी बुझियला तो हम काहे विषय पढ़ना एटॉमिक नंबर विषय हम पढ़ना तो ई एलिमेंट भितरे तो ऑक्सीजन एलिमेंट भितरे जे स्मॉल पार्टिकल रहला और सही स्मॉल पार्टिकल मानकर भितरे तो समान नंबर रो प्रोटॉन अछि बोली कहि सानियो तो समान नंबर रो प्रोटॉन रहला सही नंबर के सही एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर कोहा जिबा आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो एलिमेंट भितरे स्मॉल पार्टिकल माने रहले और सही स्मॉल पार्टिकल मानकर भितरे जेकीटा प्रोटॉन थिबा सही एलिमेंट रो तार एटॉमिक नंबर सेतिकी कोहा जिबा इज इट क्लियर टू ऑल तो ए एलिमेंट ए स्मॉल पार्टिकल भितरे 8टा प्रोटॉन अछि तो तार माने हला इटा जे ऑक्सीजन एलिमेंट हला ई ऑक्सीजन एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर हला 8 बुझियला आ ई जे स्मॉल पार्टिकल रहला ए पार्टिकल मानकू आमे ना दमा एटॉम ओके आ इटा जदी ऑक्सीजन एटॉम अछि तले ई पार्टिकल मानकू कहबा ऑक्सीजन एलिमेंट जदी अछि ई पार्टिकल मानकू कहबा ऑक्सीजन एटॉम सिमिलरली इने जे पार्टिकल माने रहले ई पार्टिकल मानकू तुमे कहबो एटॉम केन एटॉम जेन एलिमेंट थिबा सही एटॉम अनुसार सही एलिमेंट रो नाम अनुसार तके आयरन एटॉम बोली कहबो आई होप यू आर गेटिंग इट मो आउट एग्जांपल थ्रू बुझौ छै जदी बुझिना हला लेट्स गो टू द सिंपल फॉर्म नाइट्रोजन एलिमेंट हमें नाइट्रोजन एलिमेंट के जाओ इटा हला बुझे सपोज मेटल सिंपल फॉर्म नाइट्रोजन एलिमेंट तो एही नाइट्रोजन एलिमेंट भितरे भी बहुत गुडे स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल थिबा आ से स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल मानकू हमें काना नालबा से स्मॉल पार्टिकल माने हम भांगी नै पाउ ठीक अछि वी कैन नॉट ब्रेक नाइट्रोजन एलिमेंट टू दिस स्मॉल पार्टिकल तो थिले भी किंतु हमें नाइट्रोजन एलिमेंट यदि जूम करमा आगु सब समान टाइप रा पार्टिकल आगु मिलवा सेही जे समान टाइप रा पार्टिकल मिलवा नाइट्रोजन एलिमेंट भितरे तांको हमें ना दमा नाइट्रोजन एटॉम तो नाइट्रोजन बहुत गुडाय नाइट्रोजन एटॉम के नेकी अब नाइट्रोजन एलिमेंट तैयारी हेइ छै बहुत गुडे ऑक्सीजन एटॉम को नेकी ऑक्सीजन एलिमेंट तैयारी हेइ छै आ तोमर माने थिबा नाइट्रोजन रो एटॉमिक नंबर केते नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर समस्त पढिथिबो नाइट्रोजन रो एटॉमिक नंबर हला 7 तो नाइट्रोजन रो एटॉमिक नंबर 7 तार अर्थ काना नाइट्रोजन एलिमेंट भितरे जेकी भी नाइट्रोजन एटॉम अछि समस्त अंकर पाखरे 7टा लेखन प्रोटॉन अछि आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो नाइट्रोजन एटॉम भितरे केतेटा प्रोटॉन अछि 7टा प्रोटॉन अछि तो सेति लागि नाइट्रोजन एलिमेंट के आमे कहला बा नाइट्रोजन एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर आमे 7 कहला बुझियला समस्त क्लियर हला समस्त इट इज क्लियर टू ऑल तो नाइट्रोजन एलिमेंट भितरे बहुत गुडे वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर देयर और सही आइडेंटिकल पार्टिकल मान आइडेंटिकल काहे कहली सही पार्टिकल मान प्राय सब प्रॉपर्टी समान रहबा और समस्तंगर भितरे समान नंबर रो प्रोटॉन मस्ट थिबा एंड डोंट कंफ्यूज दैट ऑक्सीजन एलिमेंट रो ऑक्सीजन एटॉम रे और नाइट्रोजन एलिमेंट रो नाइट्रोजन समान माने ई प्रोटॉन समान नाही हां नाइट्रोजन एलिमेंट भितरे जेकी स्मॉल पार्टिकल रहले
सही स्मॉल पार्टिकल मान को हम नाइट्रोजन एटम कहमा और समस्त भितरे 7टा प्रोटॉन अछि सेंदी ऑक्सीजन एलिमेंट भितरे जितकी भी स्मॉल पार्टिकल सब समस्त को हम ऑक्सीजन एटम कहमा और तांगर भितरे there are 8 proton in the oxygen atoms ई सब एटम भितरे 8टा प्रोटॉन अछि सेंदी कहि पारो ई एटम भितरे केतेटा प्रोटॉन अछि केई एटम भितरे आयरन एलिमेंट जदि कहली आयरन रो एटॉमिक नंबर केते 26 और 26 जदि अछि ताहले 26 टा लेखन प्रोटॉन ई सब एटम भितरे रहबा जदि बुझी पालो समस्ते मोर क्वेश्चन दउ जे तुम समस्त निजे करबो जे एटॉमिक नंबर जानि थबो लेट्स सपोज मु कहली हमर गोटे सिंपल आमे नै जाऊ लेट्स टेक सोडियम एलिमेंट रो सिंबल केते सिंबल काना Na एबे सोडियम एलिमेंट रे बहुत गुडाए स्मॉल पार्टिकल थिबा मु दुईटा क्वेश्चन पछरो जे समस्त कमेंट बॉक्स रे आंसर देबो मु देखमा तुम मन रखियो कि नै ए जो स्मॉल पार्टिकल मान को रहिला ई स्मॉल पार्टिकल मान को ना काना हवा समस्त को ना काना कहमा स्मॉल पार्टिकल मान को आउ ए स्मॉल पार्टिकल मान को भितरे केतेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन अछि ई स्मॉल पार्टिकल मान को भितरे नंबर ऑफ प्रोटॉन समस्त काउंट करो बा नंबर ऑफ प्रोटॉन केते रहबा आ से पार्टिकल मान को हमें काई ना देबा आ ताको भितरे केतरा प्रोटॉन अछि समस्त कमेंट बॉक्स रे आंसर लिखो मु चेक करू छे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर क्वेश्चन बुझी पालो समस्ते मु सोडियम एलिमेंट देली तार भितरे बहुत गुडा स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल रहबा ए स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल मान को भितरे सेही पार्टिकल मान को ना काना हबा आ ताको भितरे केतेटा प्रोटॉन अछि देखमा कि आंसर दै पारबो वेरी गुड सो ओके गुटे आंसर की रहतला अनुष्का इज सेइंग इट इज सोडियम एटम वेरी गुड नेम इज करेक्ट ए पार्टिकल मान को हमें ना देला काना सोडियम एटम एने एटम हमें कहना बिकॉज़ एलिमेंट भितर एटम अछि वेरी गुड केतेटा प्रोटॉन रहबा गुड श्वेता बेरा अन्वेषा बेरा बाबरी बेरा विश्वंबर नायक ओके 11 प्रोटॉन ओके वेरी गुड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 प्रोटॉन वेरी गुड समस्त 11 प्रोटॉन देलेनो तार माने समस्त ठीक बुझी पारुछो मते ने के गुड लागु छै 20 सॉरी अंकित अग्रवाल 17 प्रोटॉन आंसर देजो देखो सो नाइस आई कैन आइडेंटिफाई कि रॉन्ग आंसर देला जी 17 प्रोटॉन तो मैं देलक 17 नहीं पारे बिकॉज़ शॉर्ट में केने जानबो 11 प्रोटॉन बोली कि सोडियम रो एटॉमिक नंबर हला 11 और एटॉमिक नंबर जेकी तार एटम भितरे सेकीटा प्रोटॉन रहबा बहुत टे पिला 11 आंसर देला वेरी गुड आहुरी भी की आंसर दीजो कि उड दीनबंधु में 20 एटम लेजो दैट इज 20 एटम है तो मु कहले जे नंबर ऑफ प्रोटॉन बतले जे नंबर ऑफ प्रोटॉन जे देबा 11 बिकॉज़ सोडियम रो एटॉमिक नंबर हला 11 ओके बहुत टे पिला दुर्गा शंकर दास सत्यव्रत मून ओके दीनबंधु में तो ग्रॉम हला देन आदर्श गहिर किसी ने खाली एटम लिखि दीजो आर्यन सौरभ पंडा 11 वेरी गुड विश्वंबर 11 गीतांजलि दास 17 लिखलो 17 रॉन्ग 11 इज द करेक्ट आंसर 11 प्रोटॉन अछि आ ताके हमें सोडियम एटम कहि परमा आ गुटे से हिसाब रे मैं आ गुटे क्वेश्चन दउ जे समझ जस्ट चेक करमा आप एटॉमिक नंबर जानि छ कि नहीं लेट्स सी आमर गुटे ला लेट्स सी समस्त रेडी तो मु कहली सल्फर एलिमेंट लेट्स सी सल्फर एलिमेंट तो सल्फर एलिमेंट जेन कहली ए सल्फर एलिमेंट भितरे बहुत गुडा स्मॉल पार्टिकल अछि जे हमें समस्त क्लियर हे साना मोर क्वेश्चन हला सल्फर स्मॉल पार्टिकल रहला ताके तो हमें सल्फर एटम कहमा जानि सरलानो ए सल्फर एटम बा ई समस्तंगर भितरे व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन केतेटा प्रोटॉन अछि को समस्त दिस द क्वेश्चन जस्ट एटॉमिक नंबर जानले हम ट्राई करो समस्त एबे समस्त आंसर ठीक आसवा कथा तुम एटॉमिक नंबर जानि छ मस्ट इक्वल आंसर ओके देखो ट्राई करो सल्फर एलिमेंट कहला गला तो सल्फर एलिमेंट रो जति भी स्मॉल पार्टिकल अछि समस्त को सल्फर एटम कहला गला very good fast answer is coming from December नायक very updated okay 16 आर्यन अन्वेषा बाबरी रोहित सौम्य प्रतीक प्रभास सदानंद अंकित अग्रवाल
Dinabandhu, Sitarani, very good, very good, very good, very nice presentation. Okay, most of the students are online. Very nice, very easy question, and you are also understanding well. मते लागु जे समस्त बुझी पालो बे तीनटा जिंस हमें कहला आज क्लास रे गुटे हला मैटर वेरी गुड ऑल थैंक यू समस्त बढ़िया प्रेजेंटेशन रहउचे सो हमें काण पल्ला कि बोल तो मैटर पल्ला मैटर भितरे एलिमेंट अच्छे आउ एलिमेंट भितरे तुम काण होला एटम रहला मु सिंपल ब्रोड आकार जदी कहबी जेन एलिमेंट थिबा तार भितरे सही एटम अछि बोले हम कहि पारबा एटा जेन जेन माने बुझी पारलो ओके लिखि दो समस्त if you got this concept right okay तमे जदी ए कांसेप्ट ता समस्त बुझी पारलो ताहाले समस्त कमेंट बॉक्स रे ओके लिखि पारबो लेट्स सी केन केन माने बुझी पारलो जे आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लासेस जेन माने भी कंप्लीट करि पारलो यू कैन राइट ओके ऑन योर नोट्स सो दैट मु आज क्लास एंड कर परबी जेन माने भी बुझी वेरी गुड थैंक यू टू ऑल प्रतीक अभिलाष निवेदिता गीतांजलि प्रत्युष रंजिता विश्वंबर आर्यन नंदिनी ओके प्रवीण बाबरी प्रदीप अंकित अन्वेषा मीनाक्षी वेरी गुड उत्तम मनोज आर्यन दुर्गा लाजी पांडे लेजी पांडे ओके रामकृष्ण बेमाल वेरी गुड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स आई होप तुम समस्त क्लास भल लागिथिबा केमिस्ट्री रो फर्स्ट क्लास आ केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास हम इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हे गला तुमको मो नोट सेपरेट पठाबार दरकार नहीं बिकॉज़ जेन जेनटा भी नोट रे लिखबार ले कहितली से सब नोट में ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड रे लिखि देई छै तुम सेही रफ नोट रू ही तुम फेयर नोट बने पारबो आउ इतार नोट पठाबार आवश्यकता नहीं बिकॉज़ जहां भी लिखबार कथा तुमको ऑलरेडी मु ब्लैक बोर्ड रे लिखि सारी छै तो इनु ही तुम समस्त नोट फ्रेम करबो आउ सेपरेट नोट देबा के नहीं पड़े आई होप यू आर क्लियर फॉर टुडे थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू हला तो ठीक हो जाए हाँ